Bismillahirrahmanirrahim. इसमें what we are going to see today is we are going to see the process of transcription. Transcription is also known as gene expression. It is known as gene expression, and it is a process in which the DNA sequence, the code that is present on top of the DNA, it is studied, it is read, and it is used to produce various kinds of proteins. The process of gene expression, it is completed in two steps. First step क्या है? First step इसका है transcription, and the second step जो है वो क्या है? इसका second step जो है वो है इसका translation. ठीक है? Formation of the process of formation of messenger RNA copy of DNA sequence, encoding a gene. Encoding a gene, gene is actually present on top of the DNA sequence. ठीक है? And it is, this process is carried out inside the nucleus. जीन की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी. बोर्ड की तरफ मैं जाती हूँ, दोबारा से मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, देन उसके बाद we are going to come back to the slide. ठीक है? अच्छा जी, अब आप पहले जीन की डेफिनेशन देख लीजिए कि जीन की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या आ रही है. ठीक है? ओके, नाउ यहाँ पर जीन क्या है? जीन इज रीराइट इट डाउन, इज अ लीनियर सीक्वेंस. इसमें सारी बातें आ जाती हैं. जीन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स arranged in a specific order along the DNA strand, comma, which serves to control the expression of a specific protein, या हम कह सकते हैं phenotype. ठीक है? ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें के सारी बातें जो हैं वो आ गई हैं. Gene is a linear sequence of nucleotides arranged in a specific order along the DNA strand. Linear sequence है, मतलब ऐसे सेम फ्रंट पे नहीं है, एक ही स्ट्रैंड के ऊपर लाइन में स्ट्रेट है, which serves to control the expression of a specific protein या phenotype. You can say that it is also known as a coded information for our body. ठीक है? It is also known as the coded information for our body. तो यहाँ पर आपके पास ये आ गई, हमारे पास क्या है? जीन की डेफिनेशन हमारे पास आ गई है. ठीक है? अच्छा जी, now let us go back to the slide again. अच्छा, अब आपके पास जो स्लाइड है यहाँ पर आप देखें कि you have, this is the area where the translation is going to take place. The transcription is going. Now, this process of translation and transcription, it is different from the process of DNA replication. DNA replication में, I need the board again. DNA replication के अंदर हमारे पास क्या है? दोबारा से बोर्ड की तरफ आ रही हूँ. हमारे पास इन द डीएनए रेप्लिकेशन, मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंसेस, आप लोग अपने पास टेबल बना के लिखिएगा. यहाँ पर आई एम जस्ट राइटिंग देम लाइक दैट. डीएनए रेप्लिकेशन में यू हैव टू टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, राइट? इन डीएनए रेप्लिकेशन you have two template strands, and those template strands, what are they? Those template strands, they are in opposite directions. And both of them, they serve as the mother strand, and semi-conservative replication hoti hai, and then they give rise to two new daughter strands. Inside the DNA, the replication fork जो बनता है, replication fork, वो permanently open up करता है आपके DNA strand को. It permanently unwinds the DNA strand in replication. In DNA, what happens is wherever the gene is present, वहां पर आपके पास जो है, वहां पर आपके पास एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है. ठीक है?
जहां पर भी जीन प्रेजेंट है वहां पर आपके पास एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है, एंड बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स विल नॉट बी स्टडीड इन दिस केस। क्या होगा, यहाँ पर आपका वन स्ट्रैंड जहां पर आपका जीन प्रेजेंट है, दैट स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी स्टडीड, एंड दैट स्ट्रैंड इज नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ओनली वन स्ट्रैंड आपके पास यहाँ स्टडी होगा इन ट्रांसक्रिप्शन। In translation, many enzymes are involved in unwinding and opening of the DNA strand. लेकिन यहाँ पर only one enzyme is involved. We are going to see the names of the enzyme. मैंने आपको ये टेस्ट में मैंने आपको रेप्लिकेशन वाला दिया था और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सबको याद हो गया है वो। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में आपके पास ओनली वन स्पेसिफिक एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन व्हिच इट ओपन्स अप द डीएनए स्ट्रैंड। जहां पर भी रेप्लिकेशन हैज टू टेक प्लेस, वो उस पॉइंट पर डीएनए स्ट्रैंड को जो है वो ओपन अप करता है। ठीक है, एंड इट रीड्स इट, एंड दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, एंड दैट एंजाइम हाउ डज इट रिकॉग्नाइज दैट साइट। आपके पास वहां पर जो है ना प्रोमोटर साइट्स होती हैं, दे आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रीजन्स ऑन द डीएनए व्हिच आर नोन एज द प्रोमोटर साइट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर बेटा I am talking about the transcription bubble. यहाँ पर आपके पास आपके promoter sites हैं. These promoter sites have specific regions which are present on the template strand. एंड इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ आपके प्रोमोटर साइट के साथ आपका जो आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है व्हिच इज गोइंग टू कैरी आउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, वो आके क्या करता है, वो आके अटैच हो जाता है। ठीक है, एंड देन वहां से आपका जीन एक्सप्रेशन जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ठीक है, लेट अस गो टू द स्लाइड नाउ, देन आई विल कम बैक टू द बोर्ड अगेन। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी स्लाइड को आप लोग बहुत गौर से देखेंगे। नाउ द डीएनए हैज टू स्ट्रैंड्स, द टेम्पलेट स्ट्रैंड और द एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंड द कोडिंग स्ट्रैंड और द सेंस स्ट्रैंड। अब आप देखें, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका कोड आरएनए पे आएगा और कॉपी होगा, मतलब जो स्ट्रैंड बन रहा है ऑन टॉप ऑफ द आरएनए दैट इज गोइंग टू द कोड दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस वन। देखिए सी, अब टी नहीं है तो देखिए यू, ये जी ए, अब ये सेम कोड है जो कि, तो दिस इज नोन एज द कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट इज गोइंग टू बी स्टडीड। इसका ऑपोजिट कॉपी होगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एंटीसेंस स्ट्रैंड। दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, दिस वन, और द सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब ये है कि ये वाला कोड आपका आरएनए उठाएगा यहां से। ठीक है, ओनली द टेम्पलेट इज ट्रांसक्राइब्ड, यहाँ से ओनली दिस जीन सीक्वेंस इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड एंड देन इट इज गोइंग टू बी शिफ्ट। नाउ दिस होल जो स्ट्रक्चर है, this whole structure, this whole opening is known as the transcription bubble, and this is a whole huge machine that is present, and this whole machine is actually the RNA polymerase enzyme. Okay? RNA polymerase synthesizes the messenger RNA from 5 to 3. क्या डायरेक्शन है, 5:3 सीक्वेंस बनता है। आगे डायग्राम आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5:3 सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो सिंथेसिस हो रही है यहाँ पर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में दे हैव वन टाइप ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम एंड यूकैरियोट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस। आरएनए पॉलीमरेज 1 फॉर राइबोसोमल आरएनए, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आरएनए पॉलीमरेज 2 फॉर मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 फॉर ट्रांसफर आरएनए। अब ये जो चीज है ना, RNA synthesizes messenger RNA from the 5:3, इस वक्त मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये समझें कि आपका जो RNA स्ट्रैंड जो बनना है उसका 5 पहले सेटल होना है, पहले उसका 5 सेटल होगा और 3 उसका आखिर में रिलीज होगा। वो इस ट्रेंड की बात कर रहे हैं। आरएनए सिंथेसाइजेस द मैसेंजर आरएनए इन द 5:3 का मतलब है पहले 5 इज गोइंग टू सेटल, देन 3 इज गोइंग टू सेटल। ठीक है, ये डायरेक्शन है 5:3। आई होप कि समझ आ गई है। हम इसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, द प्रोसेस of transcription, what happens? The RNA polymerase binds to the promoter
we have two promoters. Promoter is actually the site which I told you is going to be recognized by the enzyme. This is attachment site. Two promoters हमारे पास prokaryotes में है, -35 sequence, -10 sequence. -35 sequence क्यों? अब देखें यहाँ से, this is where the gene is starting from. -35 sequence means कि it is 35 nucleotides behind the gene. इसलिए हम कहते हैं -35 nucleotides behind the gene. This is in अपना prokaryotes. ठीक है, -10 sequence मतलब 10 nucleotides behind the gene. ये एक promoter site है, ये आपके पास, this is the second promoter site, and these sequences are specific MCQ question है. You don't have a chance to get this wrong. Thymine, guanine, adenine, cytosine, adenine. बुक के साथ भी चेक कर लीजिए कि यही है. ठीक है, this is the -35 of the promoter site on the अपना जो है ना prokaryotic gene, and -10 क्या है? ये है TATAAT. ठीक है, यूकैरियोट्स में डिफरेंट है. नाउ दिस इज -35 एंड दिस इज द -10 सीक्वेंस. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं. आपके पास यूकैरियोट्स के अंदर आपके पास ये जो सीक्वेंसेस हैं, यू हैव टू सीक्वेंसेस इन द यूकैरियोट्स आल्सो. वी हैव -25 सीक्वेंस. ठीक है, -25 सीक्वेंस है जो कि TATA है, जिसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं, या फिर आपके पास -70 सीक्वेंस है जो कि CAAT है, जिसको हम कैट बॉक्स कहते हैं. ठीक है, नाउ रिमेंबर वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आई थिंक क्लास में भी ये रह गया था कि these sequences are always present on the coding strand. On the template strand आपके पास opposite sequences हैं. ठीक है, these sequences are present on the coding strand. ठीक है, और आपका जो template strand है उसकी डायरेक्शन है 3:5. उसके ऊपर जो मैसेंजर RNA बनना है, that is going to be in the direction of 5:3. इसके ऊपर बनना है. This is the point of attachment, जहां से ये attachment होगी. यहाँ पर ये आएगा मैसेंजर RNA और फिर उसके बाद रीडिंग करके छोड़ देगा और फिर ये वापस बंद हो जाएगा दोबारा से. ठीक है, आगे चलते हैं. अगर कोई क्वेश्चन है तो फौरन पूछिए. RNA polymerase, the structure of RNA polymerase शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है. is composed of 5 subunits forming a core enzyme, a polypeptide, sigma factor. 4 subunits हो सकते हैं, 5 subunits हो सकते हैं. आपकी बुक में 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं क्योंकि इन्होंने अल्फा को 1 कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, होते इसके 2 पोर्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर बिकॉज नेचर इज द सेम तो उन्होंने उसको अलग अलग काउंट किया हुआ है. आपकी बुक में 1 कंसिडर किया हुआ है. A polypeptide sigma factor which is going to attach to the main enzyme, the core enzyme. It identifies the initiation site. The sigma factor का काम क्या है? Sigma factor क्या करता है? It helps to hold the enzyme on top of the template. ठीक है, it helps to hold the enzyme. After the enzyme attaches on the template, what happens के the sigma factor falls off and the core enzyme remains behind, and core enzyme आगे जो है वो it carries on the transcription process. Once the transcription starts, the sigma factor separates and the core enzyme continues the RNA formation. A transcription bubble. Now look here. This is the direction of transcription. This is the 3 end of the messenger RNA. This is the 5 end that is hanging down. This is the whole enzyme machine which is moving forward now. This is the non-template strand. This is the template strand. Okay, this is the direction of transcription. ध्यान से देखिए. RNA nucleotides are going to be placed and these nucleotides are freely floating inside the nucleoplasm. A transcription bubble appears at the point where the RNA polymerase attaches to the template. कौन सा point है? It is the promoter site. ठीक है, it is a promoter site. Promoter site के ऊपर क्या होगा? इसकी attachment हो जाएगी and then it will start to move forward. At the promoter site, the sigma factor is going to attach it and it is going to fall off. और फिर उसके बाद क्या होगा कि it is going to start to move forward. आगे चलते हैं. Transcription bubble moves down the DNA, leaving the growing RNA strand protruding behind. Now look here. 5 end is going to be
left out. Transcription bubble moving forward. पीछे देखें folding होती जा रही है. Everything is closing up again. And then 3 end पर you have addition of new nucleotides at the 3 end. And the only enzyme that is doing the magic in this procedure is the RNA polymerase. ठीक है. और ये RNA polymerase जो है वो ये वाला काम जो है वो यहाँ पर कर रहा है. ठीक है. आरएनए पॉलीमरेज जो है हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास 3 किस्म के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं. एंड इन प्रोकैरियोट्स जो हैं आपके पास जो है ना 1 टाइप है. एंड आरएनए पॉलीमरेज व्हिच वन इज इट? इट्स द आरएनए पॉलीमरेज 2. ठीक है. आरएनए पॉलीमरेज 2 जिसका काम है सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए. आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोमल आरएनए. आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसिस ऑफ द ट्रांसफर आरएनए. Okay. Transcription terminates at a specific nucleotide sequence consisting of a series of GC base pairs. Short question aa jata hai isme, followed by a series of AT base pairs. Now look here. अब इधर गौर से देखिए. I hope you can see the slide. I have changed the slide. Slide आप लोगों को I hope नजर आ रही होगी. Now look here. This is 5 and this is a 3. Now GC base pairs. Now look here. GC 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 GC. आपकी बुक में एक चीज लिखी हुई है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है, देख लीजिए अगर आपको नजर आ रहा है तो. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मतलब ये है कि आफ्टर जी यू नो के सी ने आना है, आफ्टर सी यू नो के जी ने आना है, फिर सी ने आना है, फिर जी ने आना है. मतलब इट इज अंडरस्टूड कि आफ्टर जी ऑन दिस लीनियर अरेंजमेंट यू नो के सी ने आना है. तो दिस इज द एंड. एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. देन उसके बाद एडेनिन का एक मुकम्मल एक लॉन्ग सीक्वेंस है एंड देन थाइमिन का एक मुकम्मल. नाउ लुक हियर. ये एडेनिन ये देखें AT, ये नाउ सीरीज ऑफ बेस पेयर्स है. दिस इज द डिफरेंस. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन साइटोसिन सीरीज सीक्वेंस है एंड एडेनिन थाइमिन देखें ये एक एडेनिन थाइमिन का सीक्वेंस है. So you have a long chain of GC, 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 and then you have a long chain of U, U, U. क्योंकि यहाँ पर सारे आपके पास क्या है? A's are going to be present. ठीक है. सबसे पहले GC आपके पास बेस पेयर्स है, then आपके पास AT बेस पेयर्स हैं, right? आगे चलते हैं. अब क्या होगा? When this is going to be released, when the transcript is removed, now look at the guanine cytosine sequence. We know that even during the process of replication they have such a strong power of attraction कि इनको remove, इनको अलग रखने के लिए single stranded binding proteins were needed to change the molecular weight of the DNA so that वो rebind ना हो जाए. Now यहाँ पर because these are complementary and they are in the same strand, these guanine and cytosine, what do? They start to attract each other and then एक खास डिस्टेंस के ऊपर एडजस्ट होके ये एक हेयर पिन सी बन जाती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द जीसी हेयर पिन. नाउ दिस इज गोइंग टू एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. एंड पीछे आपके पास ये एक लॉन्ग टेल आ जाती है. नाउ दिस अपना मैसेंजर आरएनए दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट हैज टू मूव ऑन इनटू द साइटोप्लाज्म नाउ for the next process which is the translation process. जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो दिया था उसमें there was a question के write down the procedure, the changes that take place in the protein and the translation of proteins inside the cytoplasm. next topic अब वो है. ठीक है. उसकी पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद फिर हम जो है ना करेंगे. अभी जो है ना आप लोग क्लास रीजॉइन करें और थोड़ा सा मुझे तकरीबन 10-15 मिनट्स और दें आप लोग, बिकॉज हमने वीडियो अभी देखनी होगी. पहले आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक. ठीक है. वीडियो आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी. ओके. नाउ दिस इज वेयर द ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग टू स्टॉप. देन आफ्टर दिस नाउ लुक हियर, दिस इज द 5 end and आप देखेंगे 5 end के बाद this is the GC hairpin. This is going to produce the GC hairpin. ठीक है. The loop is going to be produced after it dissociates from the RNA template, from the DNA template, and this is the long uracil tail. Now the next step is the maturation of the messenger RNA. The messenger RNA has to, ये slide बहुत अच्छी बेटा. The messenger RNA has to shift to the cytoplasm. It is going to be exposed inside the nucleus. The 3 end and 5 end of the messenger RNA will be
exposed inside the nucleus, and inside the nucleus we have many dangerous enzymes. We have RNases, we have DNases, we have phosphatases, and these enzymes can denature the messenger RNA. So the messenger RNA needs a cover. And when the messenger RNA needs a cover, it means that the 5 end and the 3 end of the messenger RNA has to be protected. ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा? Look, this is a self complementary sequence. इसमें ये होगा कि 5 एंड के ऊपर आपके पास एक कैप लग जाएगी, ये हमारे पास एक कैप लग जाएगी। 7 मिथाइल ग्वानिलेट की कैप है। आपकी बुक में इसको जो नाम दिया हुआ है वो क्या है? आपकी बुक में इसको नाम दिया हुआ है 7 मिथाइल ग्वानी ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दिस विल अटैच टू द 5 एंड, एंड एट द 3 एंड आपके पास एक पॉली ए टेल लग जाएगी। In the center, we have the messenger RNA. Now, one more thing. The messenger RNA is going to undergo another process also, which is called splicing. In splicing, what happens? The unnecessary regions of the messenger RNA, they are going to be cut off by a group of enzymes which are known as spliceosomes. Okay? Exons and introns will be separated. Exons are those areas where we have the genes present. एंड एक्सोन्स को फिर आपस में कनेक्ट किया जाएगा बाय द आरएनए लाइगेज। ठीक है, एक्सोन्स को कनेक्ट किया जाएगा, इंट्रॉन्स विल बी डिस्कार्डेड, दे आर द नॉन रीडेबल एरियाज, एंड एक्सोन्स इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाएगा, यहाँ पर हमें उसकी जरूरत नहीं है। एक्सोन्स इकट्ठे होंगे एंड दे विल बी जॉइंड टुगेदर बाय आरएनए लाइगेज, अपने बुक्स में देखिए। ठीक है, 5 एंड पे वी हैव द 7 मिथाइल ग्वानिलेट कैप, and 3 end where we have the adenine tail. Okay? Then it is going to pass through the nuclear envelope and it is going to enter the nuclear pore, and translation is going to take place in the cytoplasm. Now what I'm going to show you, I am going to show you the next process. पहले ये देख लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। Synthesis of mRNA. Transcription. Just as a new DNA helix is synthesized by each strand of DNA, in the same way, any definite region of this strand synthesizes the mRNA by acting as a template. This process is termed as transcription. With the help of an enzyme called the RNA polymerase, the mRNA is synthesized from the DNA. The complementary ribonucleotide molecules join the sequences of nucleotides of DNA. The U, G, C, and A of the mRNA are arranged opposite and sequentially with A, C, G, and T of the DNA, respectively. And these ribonucleotides bind each other by phosphodiester bonds to form the mRNA strand. The DNA strand, which synthesizes the mRNA in this way, is called the DNA template. And this process of synthesis is known as transcription. The synthesis of mRNA occurs on the 3 feet to 5 feet strand of DNA in the 5 feet to 3 feet direction only. Right. Okay. Now next आपके पास जो टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है